Okay, so recording is started. Okay, so before going or starting today's sessions, anyone has any questions? किसी के पास कुछ questions है? Anybody wants to ask? Just raise your hand. I'll unmute. We can discuss. So agenda for today is like as we discussed. So today we are going to we'll be discussing about the generative AI. Okay, and then after completion of the generative AI, we'll be spending around 15 to 20 minutes on the complete roadmap. Okay, complete plan, and then how that plan we execute, what we do in the plan, why that plan is important, what is required to get a job in the market, what is required to get a job in the industries. तो काफी सारे plans है that plan will be discussing. So almost will be spending around 15 to 20 minutes on the overall roadmap, overall plan, कि आप जॉब रेडी कैसे बनोगे, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए. Everything will be discussing about in detail, because becoming a data analytics engineer is not a 1 or 2 days activities, right? So it's a kind of a journey. So we'll be discussing about the journey in much more detail. Okay, so हम लोग जर्नी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशंस करेंगे. But first we'll focus on generative AI, because this is the day 2 agenda, and then the after generative AI will be spending around 20 minutes, minimum 20 minutes, because normally हम लोग उस पे 1 hour spend करते हैं. But since this boot camp is only for the 2 days, so we will try to cover the complete roadmap, the complete guidance, and that is very, very important from a recruiter perspective, from a company perspective, from a candidate perspective. So complete जो guidance है, जो complete roadmap है, जो कि आज के डेट में important है, that will be discussing. So last के जो 20 minutes है, will be focusing on that part. Okay. So to start with the generative AI, I'll hand over to Sanu. Yeah. So Sanu, you there? Yes, Santosh. Thank you so much. Good Thank you. So morning, we'll stop my everyone. sharing. Okay. And then you can start, you can share from your end. Okay, thank you so much. So I hope I'm sharing my screen. Let me know once it is visible. Yep, it is visible now. Okay. Good. Thank you so much, everyone, for yesterday's session. And today's session is about the generative AI. And we'll discuss what is generative AI, where it is linked to, and the small demo in Python code, how you can develop a lot of projects which you can mention in your resume and can build your career. Right. So I hope yesterday for all of you the session was helpful. Some information you got, and today we will try the same with the generative AI. But let us know in case of any questions in the chat board. We can unmute and you can ask. So generative AI and its applications, right? So in today's era, right? It is a new breakthrough. Can anyone answer in the chat board? Why do you think the generative AI is a new breakthrough? Why most of the people are talking about generative AI? Why it has become so much popular? Any idea? I hope some of you are typing. Yeah, so Shreya mentioned that it is advanced in any aspects. Then Rahul Okay. mentioned that cost reduction and no error. Okay. Okay. So from the name itself, what we see here, very good answers. Well tried. So from the name itself, generative AI means it can generate something new, right? That is means of generative AI. What we had in the machine learning, right? We had deep learning. So all its needs data, whatever it has seen, and like we have to give the input to that, and that then it will provide us the output.
but it was not able to generate the full sentences, some numeric forecast or predictions we were able to do. But generative AI, like, why it has been so much popular now? So because it can understand the human language nowadays. Earlier that was not the case. Only in the machine understandable language we were giving the input to the model, and it was able to generate the or give the output to us. Now we it can understand the whole new human language, right? So, one of the very popular application or in generative AI is a Chat GPT. From the time it got released, it took only 2 months to reach the 100 million users. Even I remember, like when it came, I immediately started using the Chat GPT, and after that, the usage of Google, it has been reduced. So like there were a lot of application, lot of very useful application, but ChatGPT was the one who was able to reach 100 million users in a very quick time. And why it is now the information retrieval has become so much easier. So if we remember, now also when we search in the Google, like if anything we are searching, then maybe what is machine learning, like that you are searching in the Google. So it will give you 10 different, 20 different links. And then if you want to read, you have to go to each and every link and you have to read to understand, okay, what is actually the machine learning. And then if you're not able to understand something, you again have to type in the Google, and it will be all unlinked with your previous search. But in the chat GPT, why people like so much? Because the information retrieval has become so much easy. Like when we ask, like, what is machine learning, right? It will give you the answer. After that, like if you are not able to understand something or for any particular area, like for your area, maybe related to manufacturing, related to healthcare, finance, if you are looking in that, again, you can ask, can you describe more for this area? Like, what is this term meaning? This is like a conversation. It has become like a conversation. So like in front of you one expert is sitting, like whatever he's explaining, or some teacher is there, whatever you are not able to understand, you are asking again getting the answer. So like without and getting uh, uh, like into the lot of time in the retrieval part, you are able to get all the information and very quick. You are able to, all the conversation is maintained. So like you can, it is like with you nowadays 24 by 7 till the time you have the internet connection. So it has become really useful in today's world for the information retrieval, right? How we gather. Even I remember for my interview preparation, I was using Chat GPT. I had different threads where I was preparing the things. So it is very useful tool, right? Uh, and what are the different uses? So for the content generation, right? Suppose even you can generate your resumes, right? Your like if you want to write some blogs in the social media, or you emails, the job emails you want to write. So a lot of content it can be generated using the chat GPT if instructions are given properly. For the education purpose, I was mentioning, if you want to understand any topic like machine learning, you can keep on asking, it will give you the answers. Even for coding assistance, so if you remember yesterday we were looking how to generate a Python code. So even though error are there, you can ask the chat GPT, right? It has the very best thing is that it has a conversational abilities. So it can be in the interactive way that you can keep on asking the question and it will be able to give you the answer. So these are the major uses of chat gpt. And but there are some limitations as well. So there is some limitation in the sense, there is some hallucination, because all it is, it is also trained on some data, right? So till whatever time point the data has been trained, till the time the information is present, so there are some chances that if some complex information are there, that it might be incorrect. So you cannot rely 100%, but 95% you can rely, but you have to double verify. So it can hallucinate, so that we call hallucination.
So generation of incorrect information. Also, when you are looking for some exam dates, right? 10th board exams results came. So if you're looking for up-to-date information, ChatGPT is not a tool for you. You have to use Google. And if you need, if company wants to train on their data for company specific knowledge, it will not be able to work. So it is very limited to public data, which was like no access to proprietary or the internal company database. So so here, if any company wanted to use or any professional use of chat gpt, if we want to have, then we need little bit more deeper knowledge on the generative AI. Till chat gpt is not enough. So chat gpt, every one of you can use now for your preparation for a lot of information. But for building a application, right, for company specific or professional application, knowing till chat gpt is not enough. We have to know, okay, from where it has come, like how the it has been developed. So little bit more detail on, or how you can develop your own chat gpt. So that's where we will be looking on more that today. But do we have any question till this point? Okay. Yeah, you can keep typing in case of any question. We can take it up, but yeah, let's move ahead. So to know in more detail, ChatGPT is basically the application from the generative AI, and now let's understand what is actually generative AI. So generative AI is nothing but it is a type of artificial intelligence, right? It is focused on creating models that can produce new or original content that resembles the data they were trained on. So it is not something very new, but it can transform it, and it can produce a new results. Like how it works, right? It is based on the underlying patterns or structure within the large data set, and use this knowledge to generate new unseen data points. Like here, there were some models like generative adversarial networks, transformer models. And also one more thing, this generative AI, why it has become with the text data. Whenever you have the textual data, like whatever, so there generative AI is very popular. So all these models are related to language only. Earlier also it was able to generate language, but it was not able to understand the human language. You have to, the tokenize each and every word, like BERT model. This from Google, we had this encoders, right? BERT model. So first we have to encode it, like this vectorizer. Like once this Google tried converting the text to the number of vectors. So earlier, for each word, how many times it is occurring, we were creating a frequency table and all those things. But and that was very time consuming. Also, lot of training was required. It was not easy to develop model for the language model. For numeric data, we always had models like lot of regression, classification, all different type of things were existing. Because the new with numeric data we can do this addition, subtraction, multiplication, right, division. But with the text data we were not able to do. So how many times in the paragraph particular word is occurring, like suppose you want to identify particular email is a spam or not a spam, so what are the frequent words that is the spam related. So those things we were counting, and then we were predict, okay, this if these are the words are coming, then maybe it is a spam. If it is not, then it is not a spam. So there were lot of training required, like especially for the language data, because like for each and every word we have to do the frequency count. And also one more problem was, suppose for the spam, like if any similar words are coming, the model is not trained on. So that's where the second model came, that is BERT. So what Google did, they tried to represent each word to the vector form, a set of numbers, so that all the calculations are possible, numerical calculations. And that gives the, like actually very beginning of the generative AI.
So there, lot of people were able to do this vector multiplication, all those things, and they were able to use all these GAN transform models, all those things come once the encoding came, when they were able to encode the text into vector of numbers. And so but still that time human language was not there, and then we had this LLM models. So that is a large language model. It is a very specific type of generative AI model which is designed to understand, interpret, and generate in a human language. So all these models, they were not limited, they were not for human language, but LLM is basically why it has become so much popular, because you can ask in the natural language, it will give you the response in the natural language. So that's why it is very popular. um, yeah, so this is the definition, and as this is also called LLM model. Why we call is LLM model is basically the large language model. So large means because it is trained on extensive data, language because it can understand the natural language, and model because it is some kind of predictions only of the response based on the learned data. So it is not like magically somewhere it is someone has trained the OpenAI or the Google, they have trained for the longer duration on the data, right? Like how we train the normal machine learning or deep learning model. Like, but when the data size is huge, we require a sophisticated or the very big computing resources. So, because OpenAI and Google can afford, they trained all these things, AWS, they all trained. So we have from OpenAI like GPT models, Bird, Gemini, and also a lot of free models are also available. So that is basically the LLM. So Chat GPT is basically from the OpenAI, trained on the GPT. So little bit more detail, right? Like it is a large theoretical slide actually. Here to go in a little bit more detail, generative, it is actually three terms are here. GPT means generative, pre-trained, transformers. So generative, what it means, it can if I just give the example, if you search in the Google, it gives you the predicted next words. If you are typing the student, open there. Like if you type this thing, it will give okay, what can you type next words. So that is like based on some probability. Like when people were typing this sentence, that what were the word they were typing next. So based on that probability, it was giving you the next word combination. So that is the meaning of the generative. So the GPT models are trained using the autoregressive language models, where the inputs are fed like sequence of the words. So that is basically, and pre-train, why they call pre-train is basically it is trained on very large data set before a specific task. This is like all the books which is available online, all the articles, website which are publicly available, like the general language features and structures. So all it is pre-trained. That's why we call this pre-trained, already trained. Now you do not have to do any training. You just have to load the model and start using the model. So that is where this is a pre-trained model. Then there is a transformer concept. This is also one of the very good research from the Google. It is like actually the self-attention model, this is called. So what it can do, it can understand the contextual meaning of the sentences. So and then it can give the responses. So if when earlier people were identifying this is spam or not spam, they have to sentences according to the words only they were predicting. But some emails where the context is saying something, that time it was very difficult, but transform model can understand the context, and based on that it can provide the responses. So suppose here just as two sentences, a dog is sitting on the bank of the river Ganga. So here, bank refers to the river Ganga. It can understand very well the contextual meaning. Means based on the surrounding words, it can understand. It tries to get the meaning of the word. And then we have the like I will withdraw some money from the bank. So here it will say the bank refers to the financial institution.
So that's where that generative capability, pre-trained and transformer. So these are the very core concept in the generative AI. Okay. But this is just a concept. We need some framework to develop all the things. So the very popular library or the framework to develop or to use this LLM models, right? That is the LangChain. So LangChain is a very popular Python library, and it is also free. Like it makes easier to build the applications like ChatGPT, which is powered by large language model. Okay, large LLM models. So designed to streamline the development and deployment of the generative applications. So here we have three main core concept why LangChain is still very popular. Like a lot of contributors are there. This is the actually the it provides the building block that with the LangChain packages you can connect any OpenAI model, be it OpenAI, be it Google, be it Amazon, be it any Hugging Face model. All the things you can load and you will use in the same way, exactly same way. It's only the loading is different, but the usage will be exactly same once you have the model. Um, and also you have here the chaining concept. The second very good thing it provides, that is a chaining. So you can chain multiple things, like we will see that this in the detail. And also the chat gpt, there was one more uh, limitation of the normal chat gpt. You cannot provide your company data, company pdfs, right? Like nowadays people are developing, people wants their application that it can read their document. So right now if you use a chat gpt, it will use the information which is from the internet or which is already trained on. But now for your application, you want to see your document, and based on that it should like if you're asking some question, it should answer that. So that is basically through the LangChain it will be possible. You can provide your data or the even the that you can integrate lot of APIs here, so that it can be enhanced the useful usability of the LangChain models, or LLM models can be increased. So now how do you interact with the model, right? So that is the right now what you type in the chat GPT, or yesterday but what I was typing in that Gemini, that is we call in the AI language, we call as prompt. So prompt is basically the text input, right? Text input, what we write to the LLM. Anything you are writing to an LLM is a prompt. You might be listening, prompt engineers are there. So that is nothing but the text input you are giving to LLM. Anything you are writing to the LLM is a prompt. Okay. So we have the and there is a template also, so that not everything you have to write. Some things you can make it configurable, and like when you need, you will pass those input variables, like in your function. So already you have the function, you are passing some inputs only. So that is the same meaning of prompt template. It refers to the reproducible way to generate a prompt. We will see all these things in the detail. So here in the prompt template, basically what are the things we include? The instructions to the language model. Okay, as a few set of examples. So like to help the natural language model to generate a better responses. Okay, question to the language model. So what kind of query we want to ask. So some instruction, some example, how should it perform. So that is the uses of the LLM, like how we can pass the input to the LLM model. So is there any question till this point? Yep. So any question from anyone, you can also raise your hand. So we will unmute you. We can talk, or if you want to, you can type in a chat box. I know like this generative AI is something new, completely new, but yeah, but still, if you have any questions, we can take that up.
So far, no questions. Thank you. Okay. So I hope the concept what I have given, these are just like a seed. You have to read a lot, practice a lot, but to help you, we will give some examples how you can actually use in the Python. Um, actually, I have like these are the some models. Actually, these are the some packages that you have to install. So in Python, we use my notebook screen is visible, right? Jupyter notebook screen. Uh, Yes. Okay, okay. So these are the libraries. Here we will be needing. One is the LangChain, that is a framework, LangChain dash core. And because here I will be showcasing the or using the generative AI model from the Google. So I need Google and LangChain dash Google dash GenAI. So these are the four libraries: LangChain, LangChain dash core, LangChain dash Google dash GenAI. This will be required, and this is how we install. So pip install, and like the keys also I am using. That is also freely available. You can also generate your key using this aistudio.google.com. So actually, you can use this aistudio.google.com, and like here you can click on this get API key because I am not going to generate it, but like you can go and create your own API key and you can start developing the applications on the generative AI. So it is very, very useful nowadays. Lot of applications are developed using generative AI. You know, all the text model, like for this spam and not spam, it is only by using the prompt engineering you will be able to solve. We will see all these examples. Okay. So these are the things. And now here I am loading. So from this LangChain Google GenAI, I have loaded the Google Generative AI. For the prompt, as I mentioned, that is input. For that, I am loading from the LangChain core, the package we installed. I am loading the prompt template. And then I have the output parser because like it gives in the natural language answer. But if you want for your application some JSON input or some structured input, right? So you can use this output parser. So response schema and structured output parser will help you in doing that. Okay. And this is the, actually I have already loaded my API key because it is a very private, I cannot show, but actually that it is just a string that I have given in the API key, and you can use like, so you have to like load the model like Google Generative AI, and here it is the latest model Gemini minus 2.0 minus Flash. So like that you will be able to load the model. So now earlier, if you remember, for all the text applications, you were developing your own model. But now you have to just write this thing. You no need of data preparation, nothing. It is a foundation model which Google has already developed for you. It's now how you use the model, right? So we can now it is available in our system. Okay. And suppose this is I am asking what is the largest city in India, like you know that I am invoking. So here this is how any model you load, it can be Azure OpenAI or any AWS or any Hugging Face model, the sentence remains the same. Once you have the model, model dot invoke what is the largest city in India. So I can generate, like you can see it took only zero point 0.6 and we can see the response. The largest city in is Mumbai. Like is um, what is generative AI, right? Or maybe um, what is uh, the what is the why, maybe why learning generative AI is, or
important, right? You can ask anything here, that how you are asking in the chat GPT, the same thing you can give here, and you will be able to see that it will generate. So now it has run. So here, one second. So here two kind of prints are there. So here you can see that the learning generative AI is very important for multitude of reasons, like for individual, like for the career opportunities, like I was saying, the prompt engineer, you can AI researcher, content creator, lot of news creation, like wherever the text now, everyone, even if I want to write some email for something that, or you want to create some report, that chat gpt is really useful. Like it can rewrite, like it can, you would just have to give some basic sentences, it will modify and it will write. So it has become very useful. Like one of the, like actually second hand, like problem solving, you can, wherever you are stuck, like earlier we keep on waiting, okay, for some expert, that okay, when this expert will be available, I will call him and I will ask. But now you have the carrier in your chat, this expert as a chat gpt, you can ask any question, it will not get tired, it will not get bored. So it is very important, right, for every one of you to know. So this is like any question, how this is exactly the same. Only one line you have to write, model.invoke, and it will be, now it is a chat GPT. Here also, but one thing, like here, it is because you are using the public thing, that data, whatever you will be writing, it might means it is like how the chat GPT, the same kind of security level is here as well. Okay, so now we see, like suppose we want to get some guidance. We are opening some new shop which makes the colorful socks, right? So we can just ask, okay, what will be the good company name that makes socks? So we can just invoke it, and it will be able to give. So here you can see that it has given for the playful and fun, happy feet socks, right? Calido socks, so that color your toes. So lot of different good names now. Like earlier we used to think that in Google we will type, but now with one sentence only we are able to generate something, right? Generate something new. Um, then also you can use as a coding assistance, like you need some Python code to connect with the SQL database and extract data from a specific table and convert to pandas data frame and store in the CSV. So see these big sentences I have given, and I can invoke the model, right? And I can ask for the response. So now you can see it has generated like what are the libraries I should load in Python. So this is very nice way. It has um, all the text string. It has written how I should connect all the things it has given, right? So it has become very, like at least for the starting point, it has become really useful. Okay, so this is the normal way how you were interacting this chat GPT. Here also you can interact in the same way, any model you can load and you can interact. There is no training required, right? No data actually required. So all the say 70 to 80% of time was going in the data preparation only for earlier for the text models. Now, like I was discussing on the prompt template, right? Prompt template basically, it is like in the LangChain dot prompt, it is available. So here what we give, we already write some things and we make, like using the parenthesis, we keep our inputs, like how we pass in the functions, right? It is the same way. So that you do not have to write this big sentences every time. If it is some, suppose you have make a one application which can suggest the company name, you have one Android application to suggest the, generate some baby names, earlier what we used to have. So this is kind of app, anything you give, like it will be able to generate the company name. So here you have that kind of thing. What is a good name for the company that makes this product?
So now you have what you have to give. You have to just give prompt dot format, and then product is equal to colorful socks. Now, so actually this is actually what it does. What is this basically here in place of this, it inserts the colorful socks. So this is how actually you can give here. So this is my prompt. So now model dot invoke prompt dot format and product is equal to shoes. Suppose I need some company name which makes shoe. I am opening a new shop which I will be selling shoes. So what should be the name? So here you can see I can just pass as a product. We can pass the company which makes pen or anything. So you can see Stride, right, Food Heaven. So very good names it has given, which it can be, and also uh, things we can modify. We can keep asking anytime. Right. So that is the thing it's not only one variable you can pass, two, three variable, suppose some product, and also you write, suppose I am giving some ads in the paper, right? So write some few sentences on that as well. So input variable is equal to product and features, and this is the template. So here we are giving the instruction as I mentioned. Imagine you are an experienced copywriter working on the product descriptions. Compose a compelling product description for the given product, focusing on the features. Like suppose for the product, the shoes, you have some feature. The sole is really good. Like in the rain, now rain is coming, so it will not get destroyed very easily. So some things you can give as a feature. Describe how it benefits the customer. Ensure the description is engaging, grammatically correct, and avoid repetition. Only give me in 100 words. Use a varied, relevant, and meaningful vocabulary. So this is now basically the you have given the prompt which user will pass the colorful socks, and this is it will be very good for all the weather. So you can see now it has generated. So we can just run this thing, and then the same way prompt the format we give product is equal to colorful socks and feature is equal to all weather. So earlier we were just giving the text content, but using the prompt template, it allows us to write little bit more sophisticated, that some instructions so that the results are more correct. Otherwise, you can ask in the similar way, but here when you ask, you give little bit detailed description, the outputs are more better. So this product and feature, so you can see here vanish boring footwear, right? Some things it has given calf fit for enduring comfort. So even you can write tweet thing, Facebook, the LinkedIn generate some LinkedIn uh, write up for me. So it will be able to do all the things. So it has this is the second way that to interact using the prompt template. So you can have n number of features like product feature. You're working in some brand, so you can relevant to the brand wise you generate. So we can give all the things, and it will be able to generate the responses. So do we have any question till this point? Is it clear for all of you? At least yes or no? Able to understand it? Yep. So we can see some yes. Yep. Okay, okay. Thank you so much for all the responses. So I hope it is making some senses, right? You are able to understand it. What is at least what is generative AI model, what is LLM, right? So all these things. Okay, so let's go in a little bit. But nowadays, like when we open any website, even when you open the Infina as well, that there is a small chat bot in the right bottom, right? You like you keep on typing, and like you can ask, okay, when is the next webinar scheduled? So it will give you a response immediately. Any bank website you open, or any normal website you open nowadays, everyone have their chatbot icon,
And why it has become that lot of chatbots are coming, because now it has got the ability to based on the question, it is searching for the information from some FAQ sheets and it is bringing. So if you remember the dialogue flow from the Google. So earlier, what used to happen in the chatbot, suppose we used to have some fixed set of questions, and like if you type like what is the shop opening time, it will go to this FAQ and it will bring you the responses. And if it is not able to find on those FAQ list for the chatbot, it will connect with you the real agent. So that is was one of the way to connect with the customer for the business. But nowadays, the responses also became very natural. Um, like how it has become. So, like suppose some repairing shop is there, some washing machine repair is there. So there is a manual for that washing machine, and even the mechanic who is working, that he can ask, okay, how to fix this section. So he can very well type. It will bring you the information. Even the chat bot, like whatever response it is giving, it will again attach. So this has all become very simple. So for that, one more thing is there. This is chat prompt template, which is applications, the chatbot applications, which is very useful. So there we have actually three kind of messages. One is your system message, which you give the instructions, right? Instructions to the model. And then that is second thing is the human message, what you type, what are the query you are asking, that is a human message. And then you have the AI message, this is what LLM model generates. So this is the three things that you have to understand: system message, human message, and the AI message. Okay, so that is like for the ongoing conversation. So like when you have the system message, it moves works as like for chatbot suppose if you have the bank application, so you don't want it to behave like a chatbot that it should answer all the questions. You are want to answer only the question related to bank, right? You don't want to answer any other thing because that is not your priority. uh, so here this langchain prompt. So suppose here we are developing one tourist application, tourist chatbot. So when we set the system message, na system behaves in a more systematic way, or it feels like a real virtual agent, which is a tourist guide. So here I have set up this system message. So system message. So earlier, this is now the chat prompt template. Earlier we used to have normal prompt template where we had the input variable and the like if we I just the template here, the input variable and template. Now it's a little bit advanced. That is a chat prompt template. It is even better responses it generates when we interact using the chat prompt template, where you set the system message and human message. So here, this is the format we have to give. So in the list, this is called list. Actually, this is in the Python, we call this list. So here that we have two things. One for system, you are a tourist guide. You need to provide information about popular tourist spots, local cuisines, and cultural norms. And this is a human, right? Whatever query you will passing, that will come here. So in the always we will be having whatever the inputs. This is the this kind of bracket, curly braces we have. So here it's same way you will be interacting prompt dot format. That earlier also we had the prompt dot format, and here you will be giving the query. What are the top tourist attraction in Kashmir, right? So that like you can see this print. So here I will run this thing. So this is now my prompt is ready, chat prompt. So system and human, like when you want to little bit uh, more focus on like now you have build one tourist agent only. It will not be talking any other thing. So here you will give what are the top tourist attraction in the Kashmir.
So you can just print the responses. So I'm just running it. So you can see this is paradise of earth. It is giving three, right? And here some of the what are the attractions, so whatever we ask, tourist spots, local cuisines and culture norms, all the things it will try to give for all the three places. So because here we ask three, it is giving three. So you can see how well it is able to understand. Also, like we can ask what are the top here, like if we see how the prompt was looking, you can also see that this is nothing but the normal instruction only. And this is the one of the way that more sophisticated way to interact with LLM. Actually, this is the job the prompt engineer do. So you might see lot of prompt engineer, whoever is good in English, they are able to, the better you give the instruction to your LLM model, better it performs. The more narrower or more nicer way you ask the question, the better your responses you get. So that is the prompt engineering part. Lot of prompt engineering guides are available. Um, yeah, basically we were like in the chat prompt template. Like here, right now, what can happen? That whatever earlier, if I give right now, write a toy Python code for me. So right now I'm not loaded. This is the earlier prompt. So it will generate me the Python code, right? But it is not restricted that it is, I want it to behave only as a tourist agent, but it is behaving like it is answering for everything. For that, you can restrict in the system message. That's where it becomes very important. The responses from AI should be only within the tourist information. Otherwise, do not perform. Do not provide any answer. So, okay, if I do not add this, it will start giving. But see the power of this. I have just added the same as earlier one, but now I have added this line. So now, suppose write a toy Python code for me. Okay, right. So I am sorry, I cannot provide the information that is not related to tourism. See how behave. Once we have the system message, we can control more the responses. With only the prompt template, it is not possible. So that's where that it is very useful, right? So with the system message, the prompt template we have seen. Yeah, so these are the ways to interact in the things like all the chatbot applications. The only thing here right now we have not seen the conversation back, like how you get in the chat GPT. It's a single input, single output. So that is for that also you can look on the LangChain details that you will be able to get. So if you remember, a lot of things we had for the sentiments, like a lot of models we were developing for just for the sentiment. We were getting the product feedback. In Amazon we have the product, can you classify the product feedback to positive, negative and neutral? Now with this LLM model, you just have to give this prompt template. So here now I have this classification: you are a helpful assistant, classify the sentiment of feedback as positive, negative, or neutral, and we have to give the feedback. So here I will just show you. So you have the thing, and so here I will give the feedback. Suppose the product is very attractive. So this is the, because we know this is a positive feedback. uh, it is very useful, right? So it should give me the, actually I can just directly show the output. So model, the classification template. Um, okay. Uh, Dot format. Actually, I missed this part. So you can see this is a positive. The product is product is damaged
delivery, something like that. So you can see it is a negative, this indicates a problem. It's so here, it is like, see, we do not have to train any sentiment model or any spam, non-spam. It will be able to do. We just have to pass the content, and it will give able to give you the response what we need. So all the text model now they have shifted to GenAI only. And one more very important concept, if you remember some time back, we were talking about this chain part, right? Just before. So this is the second very important concept in the LangChain, that is a chaining thing. So chaining in the LangChain is nothing but the sequence of the calls, where this calls like call to the external tools or data preprocessing steps. So chains which enable you to connect the different model, different pipeline, right? How we have in this RPA, like robotic process automation. So where you have the flow, right? So that similar kind of flow you will be able to develop using the chains. So lot of powerful application can be developed using the LLM, using the LangChain chain concept basically. So one chain in the LLM is the very simple chain. So where we give the user input to the prompt template, which we have already seen, and then prompt template goes to the LLM, and then LLM generates the output. So it is a very basic type of chain that takes the input, uh, format it within the prompt template and sends it to LLM for the processing. So that is a very simple chain. This is called sequential chain. So that is basically the input of one, input is getting to one, and output of that chain one is getting passed as the input. So here you can see prompt template, and here you can consider the LLM in the chain one and chain two. So it is series of steps executed together. So output of one component becomes the input for other. Just to show you, suppose you are writing some report, right? Or you are writing some song. So, like when you are writing the song, so you have written the song, but you don't want to include some sentences in a song, or you wanted to verify, like, how normally we do when we do some kind of report writing. We write it and then we go to our professor, they will review it, they will give us back the feedbacks, we will work on this, we will again go to the our professor, he will review the report and then will come. So this is kind of like writing and reviewing, right? So same kind of things you can develop it here. It's not limited to only the prompt engineering. So that also I will just show it quickly actually. So here, like it was a very prompt template only, like this was a prompt template, and how do we write a chain? So it is basically using this pipe operator. It's very simple concept, that prompt template you have and you have the model. So that is how you have the chain is equal to with the pipe operator. And then similar way that earlier we were invoking, here also you can invoke uh, that topic is equal to that we have given. So topic is nothing but your input. So this is in the dictionary form we have to type here, little bit changes, but it is a very beautiful concept we have in the LangChain. We can have like the output parsers, we can write any way the outputs we are, like here we can have some user defined function, okay, this is the way I need the output. So those things can be joined with this pipe operator, okay. Here you will not be able to. So this two LLM models, right? Two LLM models. One is for the capital, one is for the population. Two LLM models I can develop, and it will pass the output of LLM chain model one to the second one. It will be able to see. So here, some like you are giving only the product name, but you want to write after it gives the company name. You want to write the some descriptions on that, so you can have the two LLM models, right? And you can chain it together, and you will be
only giving the product name, but actually it will be generating some company descriptions as well. So here I just pre-generated based on that. So this is a very beautiful concept we have from the LangChain that makes it very popular. Like here, this is just an example what I was telling. So here it is basically we have this prompt template where it is for the songwriter. You are an American rapper. Your job is to come up with the lyrics based on the given topic. So for the songwriting, right? Here is the topic you have been asked to generate. So here this is a template, and like the same way we will be giving the input, that input variables and this template we have given, right? So that it's very similar. This like it is just saying it is from the prompt template package, nothing else. And we have this verifier template. Basically, like we don't want to include, like it can generate anything when we say rapper, but we don't want to make it like violence or abusive language. We don't want it to get used. So we wanted to verify, right, before it released to children, because it is a for kids a fun purpose we are developing, but it should not be any harmful or any bad word. It should not include, so that we want to verify it. So we can have like one is the verifier and one is the songwriter. So here we can have this wrapper prompted. Then we have our LLM model, and then we have this verifier, and then we have the model, and then we have the output parser. So here, like whatever song it is writing, it should verify that. So this is by purposefully I gave gun violence, and then like when I ran that, it was telling yes, it is having some mistakes. So after that, what we can, after the verifier, we can make one more thing, like whatever verifier is giving, correct that things. So those things we can keep on, like a lot of chains. We can develop lot of beauty, like where the writer is there, verifier is there. So one way to make the results better is using the prompt template. The more better way is using the system prompt template. Then if you want to, if you give little bit time to think the model, that is the chaining concept. In the chain also, right, lot of prompt engineering techniques are there, that is called like reasoning capability, right? Those things you give. So those things, a lot of very good prompt techniques are there, for the reasoning capability. And this is up to you how well you are able to write. That there is itself a job for the prompt engineering. So that is the chaining concept. We have like a lot of like for the language translator now, every time when want to translate from the suppose German to the English language, we can have one language translator application, which will be translate from the original language to the desired language. Like here we can have like I love pizza. You just decide, like here I can just so here the language prompt I have the simple chain here. I will just give, so you can see here actually the only thing we have to be careful, LangChain keeps getting updated. So some things like which was like it is able to we have to careful some things, somehow we use a model, sometimes it may change. So you have to read the documents. So there are n number of applications, n number of applications, like for vehicle mechanic, for tourist application, even you can give some PDFs. So there are a number of applications. So this is all part of the sequential chain. So chaining is a concept, and like everyone of should know and how to use. The It's very particularly useful in the scenarios where you want to connect information from multiple sources and perform a series of transformation on the data. So data retrieval, multi-step processing, and interactive applications, building a chatbot or interactive application, which requires a sequence of inputs and responses. So there, sequential chains are very useful.
The second, if you remember, right now we have the chat GPT. So right now it is able to answer all the questions. So how it has been designed. So based on the user input, okay, it decides, okay, which one to call. Is it a Python programmer? It's a poet or Wikipedia expert or things. So they have like lot of agents it can be. So that is basically the router chain based on the user input. First, it will decide the topic, right? And then it will choose that topic and basically according to that response it generates. So that is the actually second concept in the router chain, and this is the main concept of agentic AI. So now people are writing separate agent, and based on that they are calling. It's a very that agentic AI is the next concept or big concept in the generative AI. So actually, I just wanted to give, but now I will. So any kind of question answer chatbot, that what is 1 plus 2, what is a reasoning question or latest information, all the things now agentic AI can answer. So it was uh, just wanted to introduce with the capabilities of generative AI and the advancements it is happening. So actually now it is open the doors for countless creative applications, and it will be like how what you develop using the knowledge. So it is a very good time to learn all these new things, how to develop applications using generative AI, all these chains. So these are some capabilities, right? LLM abilities. It can understand what we saw, the natural language understanding. It can generate a text. It can translate. Even it can summarize the things. You give the large paragraph, it can summarize it. It can summarize in 2 3 sentences. It can rewrite it. You can develop applications for the question answering. I developed one of the application for the news summarization. So from the news, different news sources, it will extract the news for that particular client, and then it will summarize it so that their negotiation can become better. Sentiment analysis, any entity recognition. Like earlier, we used to have separate model for all these things. Conversation AI, the chatbot, the code generation part. So these are the lot of abilities, or it opens a door for a number of applications. And yeah, so like this RAG and vector database are the more applications. So basically, so this is how where now I will hand over to Santosh. But uh, if there is any question, I will be happy to answer. Yeah. थैंक यू शानो. सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, किसी का भी कुछ क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड. We will unmute. You can ask. You can type. So now this is your time. Okay. So and before moving ahead on our next agenda, so if anyone has any questions related to the yesterday sessions, related to the today sessions, किसी का कुछ भी डाउट्स है related to the topic, any resource you can suggest for future learning. Definitely, we are going to share the resource as well. So Gulam has asked that, okay, any resource. We are going to suggest a lot of resources. From there you can learn. It is awesome sessions, little technical. So I wanted today recording yesterday as well. Yeah, fine. Yeah, that is completely fine. We will talk about that one as well. Okay. So anybody wants to talk? अगर किसी को कुछ बात करना है, like if you want to ask, then you can raise your hand. I'll unmute. We can also talk. Okay. So I'll share a screen from my side. Okay. So let me share my screen. So दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक. जैसे कि कल हमने कमिट किया था कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करियर पाथ एज वेल, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. And why it is important, you will come to know in like next few slides. Okay, so here we'll be talking about another 15 to 20 minutes. Normally, like we spend our time on this the entire topic, but yeah, we'll be talking or spending around 15 to 20 minutes, or half an hour we can say that. Today कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैटर करेंगे. ओके. And then accordingly we can take this up.
So as part of the like bonuses, what like we had committed initially that okay, we will be sharing the lot of details. So I think किसी ने भी पूछा कि लर्निंग पाथ रिसोर्सेज क्या डेफिनेटली सो एज पार्ट ऑफ द बोनसेस विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू राइट बिकॉज दिस इज दैट वी had committed initially कि as part of this boot camp day one boot camp day two boot camp आपको क्या रिटर्न में मिलेगा because you are here like you are spending your 2 days time so in return what you'll be getting with you okay so definitely you'll be getting like kind of a we can say that the use cases related to the GenAI, then the detail about the GenAI. We'll be sharing all the links in the group, okay, with the individual persons. You'll be getting all the details on your WhatsApp by today EOD. Then the use cases related to the generative AI because we discussed many things about the generative AI कि उसका यूज क्या है कैसे यूज करते हैं all the technical details we'll discuss but also at the same time it is important कि concept काफी clear होने चाहिए so for that definitely कुछ कुछ हमारे research हैं based on the research we have created few documents and we will be sharing with you so आप भी इसको एक बार follow करो refer करो and then you will realize कि एक्चुअल में यूज कैसे है क्या है because whatever you cover in a session in like 1 hour definitely it is not possible to cover everything in 1 hour right so we have some use cases that we have created some question answer that we have created some detail brief description summary that we have created okay and again we have created this is from the different sources but now we have combined everything so you can just refer instead of referring all the different sources here and there then the toolkit python related toolkit कुछ कुछ हमारे पास में है ओके सो एज द पाइथन रिलेटेड टूलकिट बेसिकली एडिटर क्या है कहाँ से डाउनलोड करना है कौन सा एडिटर आपको यूज करना है दैट डिटेल्स विल बी शेयरिंग प्रैक्टिस सेट डे वन डे टू का जो प्रैक्टिस रहता है पाइथन वन बेसिकली लेवल वन लेवल टू कुछ कुछ हमने इस तरह के प्रैक्टिस सेट भी प्रिपेयर किए हुए हैं क्योंकि निचली रेफर द प्रैक्टिस सेट एंड देन यू कैन अगर ऑलरेडी आपका अगर आप पाइथन अगर यूज कर रहे हो सो यू कैन रेफर द प्रैक्टिस दैट विल ब्रीफ यू और दैट विल प्रोवाइड सम context related to each and every topic okay so वो प्रैक्टिस सेट वन में प्रैक्टिस सेट टू में कवर होगा यू विल ऑल्सो गेटिंग अ लिंक फॉर दैट वन एज वेल देन उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग है डे वन एंड डे टू रिकॉर्डिंग सो डेफिनेटली विल बी शेयरिंग बट अगेन द रिकॉर्डिंग विल बी शेयरिंग विद द नॉट विद द entire ऑडियंस with a specific group because I think the people who has opted for the recording through our portal so only those people will be getting a recording for the day one and day two एंड देन द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट वन में हम लोग कल से लाइक बात कर रहे थे कि जो हमारा पोर्टल है लाइक कि मॉक टेस्ट का जहाँ पे पोर्टल है वेयर यू कैन गो एंड फाइंड ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक फ्रॉम द ऑल द कंपनीज की कंपनीज कैसे टेस्ट कंडक्ट करती है क्या टेस्ट होते हैं सिनारियोज क्या होते हैं एवरीथिंग so we'll be giving access for a 1 month because again that is a subscription based but for like few audience हम लोग बेसिकली उसका सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ के लिए फ्री प्रोवाइड करेंगे यू कैन गो एंड जस्ट यू कैन प्रैक्टिस बेसिकली क्योंकि इस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि या तो जॉब सर्च कर रहे हैं या तो जॉब के लिए ऑलरेडी कंपनी में है प्रमोशंस के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस कर रहे होंगे सो दिस विल बी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ द स्पेशली लाइक पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब ओके इन द IT इंडस्ट्रीज काफी बेटर लाइक यू विल फाइंड एवरीथिंग इन वेरी 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 डिटेल्ड ऑन दिस पोर्टल सो विल बी गिविंग एक्सेस फॉर दिस पोर्टल फॉर अ मंथ ओके सो again that is for a limited crowd okay so this is because again this is based on some subscription so if you go here you can find the details for all the companies okay even in fact this is the design in a such way that if you are not from IT background, like if you're doing some preparation for the other services as well, you can get the details. But like since it's the session for the IT, so I'll be talking about the ITs, for example, like TCS. If I go and TCS key, and then all this is the recently like updated on a like frequently like on a specific frequency. So these all these are the up to date and updated data. So for example, if I go here कि TCS किस तरह के एग्जाम कंडक्ट करता है सो इट्स अ काइंड ऑफ पोर्टल दैट वी हैव क्रिएटेड हियर तो आप पोर्टल पे जाओगे यू कैन सी कंप्लीट पोर्टल आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो कैसे अटेम्प्ट करो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है देन द टेक्निकल क्वेश्चंस क्या है लाइक वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस क्या है रीजनिंग क्वेश्चंस क्या है एंड स्पेशली दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द freshers or people like who are looking for a job in this in the IT industries yeah so एक पोर्टल है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं एंड डेफिनेटली वी प्रोवाइड एक्सेस for the few resources okay not the entire crowd because again this is a subscription model available so I'll be coming on this again agenda here okay so यहाँ तक
एंड अगेन आई विल बी, अगर कुछ भी अगर आपका क्वेश्चंस है, यू कैन रेज योर हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, विल बी डिस्कसिंग अबाउट कुछ भी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि आई नो कि आप अगर यहाँ पर अगर हो तो विच मीन्स दैट कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप या तो सीखने के लिए हो या तो अपने गोल को अचीव करने के लिए हो। एंड इन दोनों स्टेजेस में क्या होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, डाउट्स काफ़ी रहते हैं, कंफ्यूजन्स काफ़ी रहते हैं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको कैसे प्रिपरेशंस करना है, अगर हमको अगर ऑलरेडी अगर हम आईटी में है तो उसके बाद हमको क्या करना है। तो ऑल द गाइडेंस बेसिकली and all the mentorship we are going to discuss here, okay? So this is about the bonuses that we'll be sharing by today audio. Tomorrow you'll be getting a link for all the details here, okay? Then अभी now the question is that कि अभी आज का जो दिस इज द लाइक रोड मैप की एंड ऑफ द रोड मैप, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक, ओके? सो इस रोड मैप में डेफिनेटली लाइक विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द कि आप जॉब रेडी कैसे बनोगे, बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एट द एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग, एट द एंड वी आर लुकिंग ए जॉब सिंपल। आप कोई भी वेबिनार में कोई भी कहीं भी जाता है, कोई भी वेबिनार में जाता है, सेमिनार में जाता है, वर्कशॉप में जाता है, एंड गोल इज वेरी वेरी सिंपल, फॉर एंड गोल फॉर एवरीवन इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमको कहीं ना कहीं एक जॉब चाहिए, हमको कुछ ना कुछ आईटी इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए, या ऑलरेडी हम आईटी इंडस्ट्री में है तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना, हमको प्रमोशन चाहिए। दिस इज द एंड गोल फॉर एवरीवन, लाइक वी हैव कंडक्टेड सो मेनी वेबिनार, सो मेनी सेमिनार्स एट द कॉलेज लेवल, एट द कॉर्पोरेट लेवल। एक ही गोल है कि हमको या तो एक बेटर जॉब चाहिए, अगर आप बेटर जॉब में नहीं हो, अगर आप बेटर जॉब में हो तो हमको तो प्रमोशन चाहिए, और अपने हमको अपना स्किल इन्हांस करना है। एंड दिस इज द रीजन बेसिकली वी हैव डिजाइन दिस ओवरऑल, वी कैन से दैट कि दिस रोड मैप, जहाँ पे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी, जैसे कि वो हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, सबके लिए यही फोकस रहता है कि हमको जॉब कैसे मिलेगा, हमको क्या करना है जॉब लेने के लिए, हमको कहाँ पे फोकस करना है। सो ऑल दिस थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशंस, या कुछ क्वेश्चन है कहीं भी यू कैन स्टॉप, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक क्वेश्चंस एज वेल। दिस इज अनदर स्लाइड दैट वी हैव क्रिएटेड कि जैसे कि अगर आपको 6 मंथ्स के बाद आप इमेजिन करो कि अगर आपको जो है एक 6 लाख का पैकेज चाहिए, 12 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख का पैकेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी अगर आप जॉब में हो तो, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि पीपल हु आर वर्किंग ऑन जैसे लाइक कि ओरेकल सिक्वल में काम करे, पीएल सिक्वल डेवलपर काम करे, उनको अपने आप को अपग्रेड करना है, उनको बीआई में आना है। देन वी हैव ऑल्सो सीन कि बहुत सारे लोग ऐसे मैनुअल टेस्टर काम कर रहे हैं, तो उनको अपने को ऑटोमेशन में जाना है। So there are many people who are already working in industries and they are coming out or they are learning the new things, so at least they can get a promotion, okay, they can get the good salary hike, because जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, राइट, सो तब तक आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। सो जैसे कि अगर आपको अगर 6 मंथ में अगर आप एक प्लान करके चलो कि नहीं हमको एक 6 LPA का पैकेज चाहिए, हमको एक 8 LPA का पैकेज चाहिए, हमको एक 12 LPA का पैकेज चाहिए, तो ऐसे तो जॉब मिलेगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कहीं एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट? तो एफर्ट क्या होगा, कहाँ पे एफर्ट होगा, क्योंकि एफर्ट जो है ऐसा कोई नहीं है कि जो एफर्ट नहीं डालता अपने साइड से, एवरीबॉडी लाइक ट्राई टू पुट द एफर्ट कि कोई जाके कहीं कुछ कोई कोई सर्टिफिकेशंस करता है, कोई यूट्यूब पे जाके कुछ सर्च करता है, कोई यूडीमी पे जाके सर्च करता है, बट अगेन राइट डायरेक्शंस, दिस दिस एक्सपर्ट मेंटोरशिप इज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर अगर आपने अगर 6 महीने ट्राई किया है, साल भर ट्राई किया, विच मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस होता है और वैसे बहुत रेयर सिनारियोज होता है जहाँ पे कि आप 6 मंथ्स का एफर्ट पुट करते हो, आप 8 मंथ्स का एफर्ट पुट करते हो, आप 1 ईयर का एफर्ट पुट करते हो, फिर भी आपके पास आउटपुट नहीं होता है। तो दिस इज द वेरी वेरी रेयर सिनारियो, ओके? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में राइट मेंटरशिप हो, राइट गाइडेंस हो, और राइट स्ट्रेटेजी हो। देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मिथ होता है कि नहीं अभी तो मैंने एमसीए किया है, मैंने बीसीए किया है, मेरे पास बी 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 मैंने किया है, और मेरे पास बीटेक नहीं है, मेरे पास एमटेक की डिग्री नहीं है, क्या हमको जॉब मिलेगा क्या? बट अगेन सी, डिग्री इज वन ऑफ द पार्ट, ओके, डिग्री इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली अगर आपको आईटी में आना है तो यू नीड डिग्री, बट केवल डिग्री इज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अगर आपको अगर एक जॉब चाहिए किसी भी कंपनी में, जैसे कि इवन तो यू आर फ्रॉम एनआईटी और यू आर फ्रॉम जैसे लाइक सम गुड बी स्कूल और लाइक सम जैसे ए ग्रेड स्कूल, बी ग्रेड स्कूल, अगर आपने बीटेक किया, एमसीए किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसका डिग्री लेकर आते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का अगर डेटा देख लो, अगर आपके कोई भी फ्रेंड कहीं भी काम करते होंगे,
एक्सेंचर में बहुत सारे लोग होंगे, टीसीएस में बहुत सारे लोग होंगे, इवन बैंकिंग सेक्टर, यूबीएस हो गया, देन द बार्कलेज हो गया, कोई भी कंपनी आप ले लो। केवल डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री, क्योंकि आज के डेट में देखोगे तो हर एक सिटी में, कोई भी सिटी का एग्जांपल ले लो, बिकॉज वी आर क्लोजली वर्किंग, लाइक कल जैसे हमने बताया था कि वी आर क्लोजली वर्किंग विथ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन रायपुर, छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पे कोई छत्तीसगढ़ का है क्या बेसिकली, बाय द वे? सो वी आर क्लोजली वर्किंग विथ छत्तीसगढ़ रायपुर। वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद करके यूनिवर्सिटी है, एंड इन दैट यूनिवर्सिटी जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर में अराउंड 23 इंजीनियरिंग कॉलेज, सो वी आर वर्किंग विद द 23 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। एंड सोचो कि वहाँ पे कितने लोग पास आउट हो रहे हैं, कितने लोग बी की डिग्री लेकर आते हैं वहां से, बट सबको जॉब मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि डिग्री इज रिक्वायर्ड बट डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। एट द एंड इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको आता क्या है, आप इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप वहां पे, क्योंकि हाफ एन आवर इज द इंटरव्यू, और 45 मिनट्स की जो इंटरव्यू होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट 45 मिनट्स कैन चेंज योर इंटायर करियर। तो फोकस क्या है कि आपको क्या आता है, आपका स्किल्स क्या है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका स्किल वो ये देखता नहीं है कि आप बीटेक कर कर आए हो, कि आप एमसीए कर कर आए हो, क्योंकि ही, लाइक योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड बाय एचआर। ओके, एचआर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करता है, इधर फ्रॉम द लिंक्डइन और फ्रॉम नौकरी, और वो इंटरव्यूअर के पास जाता है। इंटरव्यूअर क्या करता है कि सिंपल स्किल पे बात करता है। अगर किसी ने यहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर इंटरव्यू दिया होगा, तो दिस इज द वेरी बेसिक सिनारियो कि जब आप इंटरव्यू के पास जाते हो, आप इंटरव्यू देते हो, एंड हाफ एन आवर में डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो डिग्री इज वन ऑफ द पार्ट, ओके, डिग्री इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। ओके, स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल जो हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स आपको बनने के लिए करना क्या है? आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको सिक्वल आना चाहिए, आपको पावर बीआई आना चाहिए, आपको टेबलू आना चाहिए, आपको पाइथन में अगेन सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आपको एक डेटा सेट दिया जाता है कि जस्ट समराइज दिस डेटा इन अ डिफरेंट वे, और विजुअलाइज द डेटा यूजिंग द सीबॉन लाइब्रेरी। अगर आपको पाइथन आता है, पाइथन 80% लोगों को पाइथन आता है, क्योंकि पाइथन अभी जो है ना, सीबीएसई स्कूल हो गया चाहे आईसीएसई स्कूल हो गया, स्टैंडर्ड 6 में मैंडेटरी कर दिया गया है। 80% लोगों को पाइथन आता है, बट 80% लोगों को ये नहीं आता है कि हाउ टू यूज द पाइथन फॉर अ डेटा एनालिटिक्स वर्क, और हाउ टू यूज पाइथन फॉर अ मशीन लर्निंग, हाउ टू यूज पाइथन फॉर द एआई डेवलपमेंट। सो क्योंकि पाइथन इज एक ही पाइथन एक टूल है जो कि वाइडली सब जगह यूज होता है, तो आपको इन में सारी चीजें आनी चाहिए। सो अगेन फोकस ये है कि डिग्री चाहिए, बट along विद द डिग्री यू शुड हैव द द राइट अप्रोच, द राइट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। सी अगेन, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड ऑल्सो वी डिस्कस कि सक्सेस जो है ना, सक्सेस पे आप फोकस करो कि जर्नी जो है, सक्सेस इज काइंड ऑफ अ जर्नी। एंड ये अगर डिसाइड करके चलते हो कि हमको जैसे कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स जो है ना, हमको अच्छा एक जॉब चाहिए। बट अच्छा जॉब के लिए आपको अच्छा जॉब कोई भी आपको आपको ला के ऑफर लेटर नहीं दे देगा। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके पास ये लो, मेरे पास एक्सेंचर का ऑफर लेटर है, ये ले लो, या मेरे पास टीसीएस का ऑफर लेटर आप ले लो। फोकस क्या है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आपका पॉजिटिव थिंकिंग कितना स्ट्रांग है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं स्टूडेंट्स से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि नहीं यार, हम लोग इंटरव्यू देने गए थे, बट वहाँ पे आईआईटी के लड़के आए थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। या वहाँ पे हम एनआईटी के ज़्यादा बच्चे थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। या इंटरव्यूअर के पास ऐसे थे कि हम बीसीए किए हुए एमसीए के बच्चे आए थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा लेके चलो, क्योंकि अगर कोई भी अगर किसी अगर स्टेज पे पहुंचा है, तो वहाँ पर वो एक प्रॉपर एफर्ट के साथ पहुंचा है। आपको लोग को लगता है कि, क्या बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको तो आज 15 एलपीए का जॉब मिल रहा है, इसको तो 20 एलपीए का जॉब मिल रहा है, ये 25 एलपीए का जॉब कर रहा है। बट आप कभी भी अगर आपके पास टाइम रहता है, तो उन लोगों से बात करो कि उनकी जर्नी क्या होती है, मतलब वो लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी कहाँ पर हैं। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने फोकस्ड हो, आप कितना डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। क्योंकि अब एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, काफ़ी छोटा सा एग्जांपल है, बट ये हम बहुत जगह यूज करते हैं और बहुत बार इसको यूज भी करते हैं। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में बेसिकली बेसिकली कॉलेज में क्या होता है कि जो 4th ईयर के बच्चे होते हैं, चाहे जो 3rd ईयर के बच्चे होते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि मेरे पास तो यूट्यूब है पढ़ने के लिए, मेरे पास यूडेमी है पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जगह सारी कंटेंट नहीं मिलती है, तो बिट्स एंड पीसेस में जहाँ तहाँ जाके सर्च करते हैं। और वो 3 दिन काफ़ी फोकस रहते हैं, बट चौथे दिन से वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, 5वें दिन से वो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। और दिस इज द मेन रीजन फॉर द फेल्योर। क्योंकि 4 दिन वो काफ़ी एफर्ट डालेंगे कि हमको तो करना है, सीखना है, करना है, सीखना है, उसके बाद ठीक है सब खत्म, क्योंकि उनको लगता है अरे चलो फिर बाद में कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जब तक आप डिसिप्लिन हो, जब तक आप फोकस हो, आपको जॉब नहीं मिलेगा।
दूसरा एक एग्जांपल आपको देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कि जॉब लग जाता है, और लगता भी है क्योंकि नेटवर्क बहुत लोगों का स्ट्रांग रहता है, बहुत लोगों के फ्रेंड कहीं पे काम करते हैं, बहुत लोगों के रिलेटिव कहीं पे काम करते हैं। एट द एंड वहां पे क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास अगर स्किल नहीं है, आपने अगर किसी इंडस्ट्री में आप चले गए, आप पूछो कि वो लोग कितने दिन तक वहां पे सर्वाइव करते हैं, उनका रिटेंशन रेट क्या होता है। हार्डली 1 ईयर, 1.5 ईयर, 8 मंथ, 6 मंथ्स। और वैसे लोग इमीडिएटली जो है कंपनी उनको पीआईपी में डालती है, पीआईपी से फिर डायरेक्टली उनको बाहर आ जाते हैं। ऐसा आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, जो कि स्पेशली बेसिकली विप्रो के केसेस मिलेंगे, या आपको वर्चूसा के केसेस मिलेंगे, या आपको एलटीआई के केसेस मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पे कि आपको ये सिनारियो देखने को काफ़ी मिलता है कि लोगों ने ज्वाइन किया और 8 मंथ्स के बाद कंपनी ने उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, रीजन क्या है? क्योंकि जब भी लोग ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने इंडक्शन में जाता है, उसके बाद 1-2 महीना प्रोजेक्ट असाइन होता है, और जब तक प्रोजेक्ट काम करने का टाइम आता है तब तक लोग रियलाइज करते हैं कि यार इसको तो जो चाहिए था आता ही नहीं है। तो ऐसे लोग बाहर आते हैं, हर एक कंपनी हर एक साल काफी लोगों को निकालती है, बट ऐसे लोगों को निकालती है जिनको कि नहीं आता है, जिनके पास स्किल्ड, ऐसे आप बहुत कम और रेयर सिनेरियो देखोगे जिनके पास स्किल्ड उसको कंपनी ने निकाला है। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वी आर फ्रॉम इंडस्ट्रीज फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, एंड हम लोग इंडस्ट्रीज को काफी क्लोजली देख रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है ओवरऑल जर्नी पे फोकस करो, और जो भी सक्सेस है ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ओके, वेरी क्रिस्प एंड इंपॉर्टेंट, कि सक्सेस इज नॉट, सक्सेस उसके लिए है ही नहीं जो कि शॉर्टकट जिसको चाहिए, जिसको चाहिए कि मेरे साथ कुछ मैजिक हो जाए, जिसको चाहिए कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑन मी, चलो हमको तो कुछ तो मेरे साथ हो जाए। तो वैसे लोगों के लिए कंप्लीटली सक्सेस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एक दो जॉब मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपको मिल भी जाएगा सक्सेस, बट आपको सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो ऐसे लोगों के लिए सक्सेस है ही नहीं, जहाँ पे कि जिसके पास जो है कि नहीं हमको तो एफर्ट नहीं डालना है, चलो हम 5 दिन के एफर्ट पे चलो कुछ तो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्री में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि चलो हमको तो कहीं से कुछ तो सपोर्ट मिल जाए, मेरा कोई प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करवा दे, हम इंटरव्यू में चले जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे केसेस में ना बहुत डिफिकल्ट होता है आपको सरवाइव करना, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर लॉन्ग टर्म अगर आप अपने आप को देखते हो कि नहीं हमको तो इंडस्ट्री में 15 ईयर्स तक रहना है, 20 ईयर्स तक रहना है, 25 ईयर्स तक रहना है, तो ऑलवेज फोकस्ड रहो, अप टू डेट रहो, अपडेटेड रहो। एंड देन उसके बाद में जो है, ट्राई टू ऑलवेज इन्हांस योर स्किल्स, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हो या उसके बाद हो। हमारे साथ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि जॉब लग जाए तो उसके बाद हम लोग यही बोलते हैं कि नहीं, जॉब लगना इज वन ऑफ द लाइक, कि आपके साथ अगर आपका कहीं भी जॉब लग गया तो जॉब लगा, दैट इज फाइन, बट जॉब इज काइंड ऑफ वन ऑफ योर स्टेप। ऐसा नहीं कि आप जॉब लग गया तो आप सरकारी नौकरी में थोड़ी जा रहे हो, आप थोड़ी जो रेलवे का नौकरी करा करके रेलवे में जा रहे हो, या बैंकिंग का नौकरी बैंक पीओ लेके बैंक बैंक में जा रहे हो, कि आप 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लोगे। कंपनी है, हर एक साल में अप्रेजल होते हैं, हर एक साल में लोगों का असेसमेंट होता है, अगर जो लोग परफॉर्म नहीं करते हो 6 मंथ्स में, 1 ईयर में बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि फोकस रहना, डिसिप्लिन रहना, अपने आप को इन्हांस करना, अपने आप को हमेशा अप टू डेट करना। अब ना क्वेश्चन ये आती है कि अभी हम लोग जो रोड मैप की बात कर रहे थे कि करना क्या आपको बेसिकली। अभी तो ठीक है कि जो भी हम लोग रोड मैप डिफाइन कर रहे हैं, जो भी हमने रोड मैप अभी तक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत लोगों के लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता, हो सकता है कि 100% काम नहीं करता, ऐसा भी आई आई कैन से कि 100% काम, मान लो कि अब कोई अगर अपने साइड से अगर एफर्ट डालने के लिए रेडी ही नहीं है, तो उसके लिए सही में ये रोड मैप काम नहीं करेगा। अगर आप कमिटेड नहीं हो, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो आपके लिए रोड मैप काम नहीं करेगा। बट अगर आप कमिटेड हो और अगर आप डेडिकेटेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड मैप आपके लिए परफेक्टली फाइन। और इसके बाद भी अगर आपका जॉब नहीं लगता तो देर इज सम डिफरेंट इश्यूज। अगर इसके बाद भी अगर आपका प्रमोशन नहीं होता तो देन देयर इज डिफरेंट इश्यूज। तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कि इस रोड मैप को यूज करके लोगों का जॉब लगा है, लोगों का प्रमोशन हुआ है। एंड रोड मैप इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जाके कहीं भी सर्च करो द रोड मैप के लेके हम लोग जो बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग कि आपको जॉब लगेगा, वी आर टॉकिंग कि बेसिकली कि आप जॉब रेडी कैसे बनोगे। हमारा काम है कि आपको जॉब रेडी बनाना, और एक बार अगर आप जब जॉब रेडी बन गए तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। मतलब आई आई थिंक ये एक एक डायलॉग था, 3 इडियट्स था, आई थिंक सबने मूवी देखी होगी। उसमें एक फेमस डायलॉग क्या था, आई अनम्यूट एंड देन विल टॉक अबाउट इट। किसी को याद है क्या वो डायलॉग? एक फेमस डायलॉग था, क्या था? कोई टाइप करेगा? आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर कि वो एक फेमस डायलॉग था जब 3 इडियट्स में, दिस वन, ये कहीं तो हमने लिखा था उसको, दिस वन, या
कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी आएगी। सो बिकम ए कैपेबल। अगर एक बार अगर आप कैपेबल बन गए, अगर आपको अगर एक्सेल आने लगा, आपको अगर पावर बीआई आने लगा, आपको अगर डेटा एनालिटिक्स के सारे लाइब्रेरीज आने लगे, अगर आपको मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज आने लगे, देन अगर आपको जेनेटिव एआई के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो जॉब आपके पीछे आएगी, क्योंकि आपका प्रोफाइल आपके बारे में बात करेगा। आप नहीं बात करोगे अपने बारे में, आपका प्रोफाइल विल टॉक अबाउट दैट ऑल द थिंग, ऑल द डिटेल्स अबाउट यू। क्योंकि आपका जो फर्स्ट जो जो क्राइटेरिया होता है, जो फर्स्ट एंट्री का जो पॉइंट होता है, दैट इज योर प्रोफाइल। सो फोकस ऑलवेज ऑन द कैपेबल, लाइक मतलब फोकस हमेशा जो है स्किल पे फोकस करो। कोई भी विदाउट स्किल अगर आप चाहते हो कि हमको अगर सर्वाइवर मिल जाए, हमको अगर एंट्री मिल जाए, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रोड मैप। ओके, रोड मैप जो अब हमारा है, दिस इज वेरी क्लियर डिफाइंड रोड मैप। जो 6 मंथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि राइट स्किल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट स्किल जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं भी कुछ कुछ भी करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आओ चाहे आप कहीं भी जाओ, फोकस रहो। 6 मंथ्स के लिए आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, डेडिकेटेड हो जाओ कि हमको जो है पूरा लर्निंग करना है, बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है। बहुत सारे इनफैक्ट जो डेटा साइंस इंजीनियर होते हैं, उनके पास जो सोर्सेज का होता है, कैगल में जाओ, जाके बहुत सारे डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। अब आप बहुत सारा प्रोजेक्ट जब तक नहीं बनाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो देन आप स्ट्रगल करोगे। तो फोकस ऑन द राइट स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद होता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कल भी हम इस पॉइंट पर फोकस किए थे कि 80% 85% लोगों के पास में उनका गिटहब अकाउंट होता ही नहीं है। जब आपके पास खुद का गिटहब अकाउंट नहीं है, तो आप इंटरव्यू को दिखाओगे क्या? आप लोग मान लो कि अगर 20-25 प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं से भी डेटा सेट लेकर आ जाओ। आजकल डेटा सेट इजीली अवेलेबल है, डेटा सेट कहीं से भी लेकर आ जाओ। मतलब आप इंश्योरेंस का डेटा ले लो, फ्रॉड का डेटा ले लो, बैंकिंग का डेटा ले लो। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं ना कहीं तो वो विजुअल होना चाहिए। कहाँ से विजुअल होगा? आपके गिटहब प्रोफाइल से विजुअल होगा, कोई गिटहब अकाउंट से विजुअल होगा। 80% लोग के पास गिटहब अकाउंट होता ही नहीं है। तो आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन जब करने जाते हो, तो आपको उसके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं, आपके पास बताने के लिए कुछ होता नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास गिटहब का प्रोफाइल होनी चाहिए। आपका जो प्रोफाइल है, जो 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 रिज्यूमे है, दैट शुड टॉक मोर अबाउट योर ओवरऑल स्किल्स, योर ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाओ, स्किल पे फोकस करो, पोर्टफोलियो पे फोकस करो। देन बिजनेस, थिंक फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव। कि अगर मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में, जैसे एक रिटेल के एग्जांपल लेते हैं, कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर ई कॉमर्स कंपनी, देन आपको रिसोर्स से क्या चाहिए? जस्ट थिंक फ्रॉम ए बिजनेस परस्पेक्टिव। आपको अगर मान लो कि अगर आप किसी ई कॉमर्स में ज्वाइन करते हो, आप किसी आप बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करते हो, आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए? मतलब जस्ट थिंक फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव कि आपका थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि व्हाट बेसिकली कंपनी इज लुकिंग। एंड इफ योर थिंकिंग इज स्ट्रांग, यू कैन थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, देन आप उसके वे में ही कम्युनिकेट करोगे। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप बात करोगे, सो विल बी ऑल्सो टॉकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, फ्रॉम दैट लेंस। अगर आपका अगर वो लेंस ही क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट टॉक फ्रॉम दैट लेंस। सो लर्निंग फ्रॉम अ बिजनेस साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, जो हम लोग बात करते हैं कि आपका ब्रांडिंग, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज योर प्रोफाइल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमने क्या देखे थे कि प्रीवियस जो भी हमारे जो ऑलरेडी केसेस है, जहाँ पे कि हम लोग रिव्यू कर रहे थे, कि लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग ही नहीं रहता है, होता ही नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल। क्योंकि अगर आज के डेट में अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो अभी हम लोग जेनेटिव एआई की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि कोई भी एचआर जो है, अगर मान लो कि अगर आप एक्सेंचर कंपनी के किसी डेटा एनालिटिक जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो जाकर भी नौकरी पे या लिंक्डइन पे, आपको लगता है कि कोई वहाँ पे फिजिकली एचआर बैठा है जो कि आपका रिव्यू कर रहा है प्रोफाइल? नहीं, वो टाइम चेंज हो गया। क्योंकि हर एक जॉब पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, और उसको रिव्यू कौन करता है? आज के डेट में रिव्यू कौन करता है? उसको एआई मॉडल रिव्यू करता है। और एआई मॉडल जब आपके प्रोफाइल को रिव्यू करेगा, और आपके प्रोफाइल में वो सब सारे कंटेंट नहीं होंगे जो कि आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर सके, तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि लोग ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं नौकरी पे, लिंक्डइन पे, बट उनको कॉल नहीं आता है। कॉल नहीं आने का रीजन यही है, क्योंकि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, आपका प्रोफाइल आपके बारे में बात नहीं कर रहा, आपका प्रोफाइल आपकी स्किल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांडिंग जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप मार्केट में सेल हो पाओगे। सेल इन द सेंस कि आपको उतना ज्यादा मार्केट से कॉल आएगा, उतना ज्यादा आपको एचआर से कॉल आएगा। तो ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया। स्किल्स इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट, थिंकिंग फ्रॉम अ बिजनेस लेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन द फोर्थ इज ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस पर फोकस करो, इस पर सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में आता है कि
इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि वी हैव सीन कि टेक्निकल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा है, टेक्निकल अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं है। और बहुत लोग, ऐसा होता है, 80% लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज पर रहते हो ना, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है। और होता सबके साथ ही होता है। कोई भी अगर, स्पेशली जो 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस जो लोग हैं, चाहे जो जिनको सीरियस का एक्सपीरियंस है, या जिनको जो कम्प्लीटली फ्रेश है, तो उनके साथ तो खैर काफ़ी ज़्यादा होता है कि पता नहीं वो कहीं ना कहीं एक डर जाते हैं, इंटरव्यू से पहले डर जाते हैं। और इंटरव्यू से पहले जो लोग डर जाते हैं, वो इंटरव्यू में इवन दो की चीज़ें आती हैं, बट फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और ये सबके साथ होता है। ये डर जाके कहाँ पे खत्म होता है, जब आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं चलो कोई भी कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे। बट इनिशियल स्टेज पे ये सबके साथ होता ही होता है। और उस डर को कम करने के लिए आपका जो है ना, आपका टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें स्ट्रांग है, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। बिकॉज अगर किसी का जॉब लगा है ना, तो आप जाके उनसे एक बार बात करो, लाइक कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर उन्होंने किस तरह का दिया, उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग किस तरह का होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, गेट द गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट। ये हम सबको बोलते हैं कि आप जो है ना, अपने दोस्त से बात मत करो। अब एग्जांपल, आप एक एग्जांपल आप लेके चलो कि लाइक आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, ओके, आई हैव ऑलमोस्ट 19 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। अब हमसे कोई अगर सिविल का बंदा आके बात करता है कि हमको कुछ गाइडेंस चाहिए, डू यू रियली थिंक दैट कि हम उसको गाइड कर पाएंगे? हमको सिविल का एबीसी नहीं आता है, अगर हमको कोई, अगर मैकेनिकल का कोई अगर मेरे पास आता है, और वो अगर हमको बोलता है कि नहीं हमको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो डू यू रियली थिंक दैट कि हम मैकेनिकल के लिए कुछ गाइड कर पाएंगे? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और लोग क्या करते हैं कि उनके उनके जो सीनियर होते हैं उनके सराउंडिंग में, उनसे बात करते हैं कि अच्छा चलो यार बताओ कि कैसे हमको जॉब के लिए क्या क्या करना है। अब कोई मैकेनिकल का बंदा, कोई सिविल का बंदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक का बंदा आपको क्या गाइड करेगा? और आप किसी को जब मान लो कि अब 10 years के बाद अपना सिचुएशन सोचो कि अगर आप आईटी कंपनी में हो, आप एज ए डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर काम करो, आप किसी को गाइड करोगे कि उसको केमिकल में क्या करना है? कैसे गाइड करोगे? मतलब सो मेंटरशिप फ्रॉम द राइट पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एक मेंटर खोजो, बट वो राइट मेंटर होना चाहिए। चाहे आपको रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, या आप जिसको जानते हो नहीं जानते हो, मेंटर इज ऑलवेज फ्रॉम द राइट इंडस्ट्रीज। राइट मेंटर फॉर अ राइट स्किल, राइट टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ रोड मैप दैट वी हैव, ओके। एंड इसीलिए हमने बोला कि 6 months का रोड मैप है। ये क्विक विन कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर क्विक विन लेने जाओगे तो बस वही होगा, जॉब मिलेगा, गलती से अगर जॉब मिल भी गया मिलेगा, एंड देन सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, फिर आप उसी डेटा में आ जाओगे कि कंपनी ने आपको भी निकाल दिया। सो द, अगर कुछ करना है तो फोकस करो, अपने आप को अपना स्किल डेवलप करो, एंड इन ये सारी चीज़ों पे फोकस करो। कि केवल स्किल नहीं, स्किल के साथ साथ में पोर्टफोलियो पे फोकस करो, बिजनेस लेंस पे फोकस करो, ब्रांडिंग पे फोकस करो, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस करो, गेट प्रॉपर गाइडेंस, मतलब लोगों से बात करो कि उनके कंपनी में क्या चल रहा है, वहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का रिक्रूटमेंट हो रहा है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, कंपनी का ओवरऑल अभी स्ट्रेटेजी क्या है, काफ़ी सारा, काफ़ी कुछ रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको जॉब रेडी बनना है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगेन द सेम स्लाइड, ओके, आई विल नॉट बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस वन कि अगर उसमें क्या सीखना क्या नहीं सीखना, दिस इज द सेम थिंग, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे। देन आई बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन दिस पार्ट, ओके। सो दिस इज अगेन वी कैन से दैट कि जो मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस जो है बहुत सारे, और 80% लोगों के सिचुएशन यही रहता है कि उनको जाके यूट्यूब में जाके कुछ चेक करना है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई राइट गाइडेंस नहीं है, कोई राइट मेंटोरशिप नहीं है, कोई भी प्रूवन स्ट्रेटेजी है ही नहीं। और विदाउट, अगर आप स्ट्रेटेजी अगर वर्क करो तो आप केवल वर्क करोगे, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, और आई एम श्योर कि नहीं मिलेगा। अगर वैसे बहुत सारे रेयर केस होते हैं, 1 और 2% जिनको कि विदाउट स्ट्रेटेजी आउटपुट मिलता है, तुक्का सबका लगता है, मतलब कहीं भी तुक्का, अगर वो शेयर मार्केट में भी तुक्का लग जाता है कि कोई अगर डेली ट्रेडिंग कर रहा तो किसी दिन वो 5,000 का उसको अर्निंग हो गया, और बाकी 29 days जो है लॉसेस में चल रहा है। तो तुक्का सबका लगता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, कुछ अगर बेटर अचीव करना है, कुछ अगर प्रॉपर वे में अचीव करना है, तो ऑलवेज गो विद स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, रोड मैप, मेंटोरशिप काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अगेन, हम लोग क्या, हमारा प्रोसेस क्या है कि वी डू नॉट टेक एडमिशन फॉर एनीवन, ओके, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे हम लोग एसएपी का कोर्स करें, या हम लोग डेटा एनालिस्ट का कोर्स करें, डेटा साइंस का करें,
या किसी और भी, जैसे कि हमारे पास जो फर्दर ऑटोमेशन से हम लोग किसी का डायरेक्ट एडमिशन हम लोग किसी का लेते ही नहीं, अनलेस अंटिल वी गो फॉर ए काइंड ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड इंटरव्यू प्रोसेस। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे स्क्रीनिंग प्रोसेस में आओ, विल बी गेटिंग ए फॉर्म, ओके। एंड दिस मंथ जो स्क्रीनिंग प्रोसेस हम लोग करें, क्योंकि ऑलवेज वी डू द स्क्रीनिंग प्रोसेस विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट मेंटर, ओके। एंड जो हम लोग इस मंथ इस बैच के लिए जो हमने मेंटर असाइन किया है जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस करेगा आपके साथ, वो मेंटर 15 मिनट्स आपके साथ बात करेगा, आपको समझेगा। क्योंकि इसी इस फोरम में आज तो खैर लोग कम है, बट नॉर्मली लाइक वी डू दिस सेशन विद 80-90 पीपल्स, ओके। इस फोरम में आपके बारे में जब तक कोई अगर आपको जानेगा नहीं, तब तक आपको गाइड नहीं करेगा। एंड दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव डिफाइन, ओके, फॉर 15 to 20 मिनट्स का एक हमारा प्रोसेस रहता है, जहाँ पे कि आपको एक मेंटर असाइन होगा। आप आपके साथ उसको आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म में अराउंड 18 to 19 क्वेश्चनर है, रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड, रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू योर एजुकेशनल गैप, रिलेटेड टू योर पर्सन, एवरीथिंग। आपका डेटा हमारे पास आता है, आपको हमारी टीम से कॉल आएगा, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल होगा। एंड दैट इंटरव्यू स्क्रीनिंग विल बी डन विद द मेंटर, क्योंकि ऑलवेज हर एक बैच के लिए हम लोग एक मेंटर असाइन करते हैं। और इस बार जो हमने मेंटर असाइन किया है इस बैच इस आपके बैच के लिए, ही इज अ मेंटर। सो आनंद तिवारी इज प्रोग्राम मैनेजर, ओके, करंटली वर्किंग इन इन्फोसिस, ओके, वर्किंग एज ए पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम मैनेजर। सो सी, आप जब राइट लोगों से बात करोगे तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगा, ओके। एंड राइट गाइडेंस मिलेगा, देन यू कैन टेक समथिंग। और हमारा प्रोसेस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब तक अगर मेंटोर से अगर क्लियरेंस नहीं आता है कि आप रेडी हो, आप ओके हो, देन वी डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए आपने कल से आज तक देखा होगा, हमने कभी बात ही नहीं की कि आप हमारे यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करो, हमारा इतना फी है, इतना चार्जेस नहीं। क्योंकि एट द एंड आपका गोल हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक फेल्योर है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ओवरऑल पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं भी कुछ फेल्योर आ जाए। एक दो केसेस रहेंगे ऑलवेज एक दो केसेस रहते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं कुछ फेल्योर आ जाए। क्योंकि आपका अगर अगर आप फेल होते हो, अगर हम लोग फेल होते हो, तो कहीं ना कहीं आप जाके फीडबैक दोगे कि हाँ यहाँ पर का प्रोसेस हमको काम नहीं आया। इसीलिए हम लोग काफी प्रॉपरली स्क्रीनिंग प्रोसेस में जाते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस में जाते हैं। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही है, क्योंकि जब तक हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, जब तक हम आपका स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फॉर दिस मंथ, फॉर दिस बैच, वी हैव असाइंड आनंद तिवारी। ही इज a portfolio manager in the Infosys. I think if his profile is there, then I'll quickly show you the profile as well. So this is the person, okay, will be assigned for this batch, okay. So आप जब भी अगर 1-to-1 सेशन बुक करोगे, he is currently working in a Infosys, okay, as a program manager and then the payment portfolios. He is also like from a banking background, okay. So you'll be getting a chance। जो 15 मिनट का जो मीटिंग होगा, जो 20 मिनट का जो मीटिंग होगा, इंडिविजुअल 1-to-1 मीटिंग, वो इसके आनंद के साथ होगा। एंड देन डेफिनेटली विल बी देयर इन दिस कॉल टू गाइड यू फर्दर। तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, इफ यू रियली वांट्स कि और स्क्रीनिंग में हम लोग करते हैं क्या, वो भी आपको बता देते हैं कि वी डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस, करियर गैप, काफी ऑल दिस थिंग्स बेसिकली वी डिस्कस एट द इंडिविजुअल लेवल। एंड देन उसके बाद हमारा क्या गाइडेंस होगा आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, देन वी गाइड। एंड आपके पास एक फॉर्म आएगा, तो यू कैन फिल दिस फॉर्म। लेट मी ऑल्सो पुट दिस फॉर्म इन दिस chat as well, so you can fill this form really if you want us to schedule a session with mentor। एंड जो भी सेशंस रहेगा, हम लोग 1 वीक के लिए एक मेंटर लाइक कि सारा का सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक में खत्म करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी ऑफ द मेंटर, डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी ऑफ योर टाइम। सो आपको लगता है कि आपको अगर एक 1-to-1 सेशन चाहिए, ओके, गाइडेंस, एंड अगेन अगेन वी गो फॉर अ वेरी लिमिटेड, बिकॉज किसी एक पर्सन के लिए 40-50 लोगों के साथ टाइम देना इज नॉट फिजिबल, राइट। सो लिमिटेड रहता है, 20 लोग हम लोग इसमें अलाउ करते हैं। एंड इवन कुछ कुछ केसेस के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पे पेड भी किया हुआ है, बट यहाँ पे लाइक फॉर अ डेटा एनालिटिक्स दिस इज कम्प्लीटली लाइक दिस सेशन इज कम्प्लीटली फ्री। सो आप वहाँ पे अपना टाइम बुक करो, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है कुछ एक बेसिक अमाउंट पे करके इस सेशन में आप आए हुए हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपका करियर कैसा होना चाहिए, आपको गाइडेंस किस तरह का चाहिए, आपको आपका आप किस तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट्स और किस तरह के जॉब के लिए आप देख रहे हो, या किसी प्रमोशन के लिए देख रहे हो, या कुछ भी, सो जस्ट बुक ए सेशन। डेफिनेटली विल डिस्कस इन 1-to-1, ओके, विथ मेंटर, एंड देन डेफिनेटली वी कैन गाइड यू कि आपको फर्दर क्या करना, कैसे करना है। एंड इन दैट सेशन अगर आपको अगर हमारे साथ ज्वाइन करना, यू कैन ज्वाइन विथ अस। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट गाइडेंस 1-to-1 session is very important, okay, if you want to really continue further with us, okay। कुछ क्वेश्चंस अभी किसी के साथ भी, एंड देन आई वाज टॉकिंग अबाउट लेट्स कि अगर इसलिए मैंने पूछा कि स्पेशली रायपुर से कितने लोग हैं। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द
सेशन जो जो विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट 1200 स्टूडेंट अभी हमारे साथ में अभी इनरोल करे। 1200 स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट वन और टू और 10 और 20। सो हर एक के लिए अभी हमारे पास में कुछ कोटा डिफाइन किया गया। इफ यू कैन सी दिस इज द पोर्टल फॉर दिस विवेकानंद स्वामी यूनिवर्सिटी, यू कैन सी दिस इज द पोर्टल लाइक सी एस आई डी हो गया, ए आई एम एल हो गया, आई टी हो गया, आई टी आई टी Just हो गया। sorry to stop you. Your screen is not visible. The अच्छा, portal you are showing. ओके ओके। आनंद के स्क्रीन आपको नहीं दिखा? No, no. ओ ओ ओ, अरे यू शुड पॉइंटेड अर्लियर। Yeah. So this is the person that I'm talking about. This is Anand. Okay. He is currently working as a program manager and then portfolio manager in Infosys. Okay. So जो भी अभी सेशन हम लोग बुक करेंगे इस बैच के लिए, जो भी सेशन बुक होगा आनंद के साथ बुक होगा, डेफिनेटली विल बी देयर बिकॉज we all can guide you. So ये अभी Anand is assigned for this batch. Okay, so normally like you can see कि there are multiple mentor we have and we assign a different mentor like depending on their availability. So Anand के availability इस week में, so you can see all these mentor are currently closely and there are many but they are closely working with us on a regular time, regular basis. So अभी आनंद के साथ 10 सेशंस, अगर आपको लगता है कि कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ मेंटरशिप चाहिए, आपको करियर में और कैसे प्लान करना है, जॉब कैसे लेना है, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वही आपको गाइड करेगा, जो इंडस्ट्री में है नहीं वो आपको गाइड क्या करेगा। सिंपल सा एक लाइन की आप बात सोचो कि जो इंडस्ट्री में ही नहीं है आपको कैसे गाइड करेगा। तो जस्ट लिंक ऑलरेडी है प्रोवाइडेड हियर, बुक द सेशंस। ओके, एंड देन वहाँ पर आपका एक बार डिटेल आ जाता है, देन वी विल सेट अप ए 1-to-1 मीटिंग। अभी हम जो रायपुर की जो बात कर रहे थे, राइट, सो दिस इज द डेटा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो नाउ लाइक यूनिवर्सिटी हैज गिवन 1200 सीट्स फॉर अस एंड दैट मीटिंग दैट ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन जैन। सो सी हमारा कॉलेज के साथ कोलोब्रेशन कल हमने डिस्कस किया था कि वी आर क्लोजली वर्किंग विद 38-39 कॉलेजेस एंड नाउ वी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी। So this is the university basically. Okay, so now basically we have started and all that. So this is छत्तीसगढ़ के विवेकानंद एंड इनके इस यूनिवर्सिटी के अंडर में इफ यू सी द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऑलमोस्ट अराउंड 24 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के पास में। एंड देन इफ डिप्लोमा कॉलेजेस इज मोर देन 100 डिप्लोमा कॉलेजेस आर इनरोल्ड विथ दिस यूनिवर्सिटी। यू कैन गो, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर दिस वन। एंड जो हम लोग अभी कर रहे हैं फॉर दिस फोर्थ ईयर एंड देन द सिक्स सेम बैचेस के लिए, तो वी हैव नाउ लाइक रिसीव अ कोटा ऑफ 1200। यू कैन सी आवर नेम हियर, लाइक दिस इज द यूनिवर्सिटी पोर्टल एंड दिस इज द लाइक द कोटा दैट वी हैव रिसीव। सो दिस इज द रायपुर सेंटर, इन्फिनिक्स लर्निंग सोल्यूशन रायपुर। सो वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रायपुर एज वेल, बिकॉज इसलिए मैंने पूछा कि कोई रायपुर से है क्या यहाँ पे, या कोई छत्तीसगढ़ से है क्या यहाँ पर। सो वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रायपुर। And this is all the quota that is assigned. So like in different categories. So CS quota is already full. AIML quota like is still 48 that students are filling. So this will be deadline is given for tomorrow. So we are not working only with the industries. We are also working with the colleges as well. Right? We are working with the corporate as well. So and इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इफ यू आर वर्किंग विद द कॉलेजेस, इफ यू आर वर्किंग विद द कॉरपोरेट, देन इफ यू आर वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी, देन डेफिनेटली हमारा जो गाइडेंस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होगा, जहाँ पे हम लोग जो गाइड करेंगे। एंड हमारे पास में मैंने आपको स्टेट में बताया था कि शॉर्टकट का कुछ स्कोप नहीं है। अगर किसी को चाहिए कि कल हमको एक नेक्स्ट मंथ में कुछ जॉब मिलेगा कि हमको ये आता है, आपको क्या आता है दैट इज जनरल मैटर। हम लोग जब एसेस करेंगे, तो हम लोग जब इसको जब आपका स्क्रीनिंग करेंगे, तो देन विल रियलाइज कि आपको क्या आता है, विल गिव ए फीडबैक एंड अकॉर्डिंगली वी विल लेट यू नो कि और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी का भी कुछ क्वेश्चंस है, बिकॉज विल बी शेयरिंग ऑल दिस लिंक इन द ग्रुप। अगर लिंक नहीं मिला तो मुझे बताओ, आई अलाउ यू टू टॉक। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप माई शेयरिंग। ओके, आई हैव गिवन अनम्यूट एक्सेस टू एवरीवन। किसी का कुछ क्वेश्चंस, एनीबॉडी वांट्स टू टॉक एनीथिंग? कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, बिकॉज एनीवेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आपको कुछ, अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, डाउट्स है, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग और टेकिंग इन द पर्सनल 1-to-1 कॉल, बट नॉट इन दिस फोरम। बट कुछ अगर इन जनरल कुछ क्वेश्चंस है, बहुत लोगों के माइंड में डाउट होता है कि कंपनी इतनी सारी निकालते रहती है, फिर इतना सारा जॉब कहाँ से आता है। जॉब काफ़ी है, आप जाके नौकरी पे सर्च करो, आप जाके लिंक्डइन पे सर्च करो। इसलिए मैंने आपको वो लाइन दिखाया जो 3 इडियट्स वाला एक लाइन है कि अपने आप को डेवलप करो, कैपेबल बनो, और जो भी जो है ना एक बार अगर आप कैपेबल बन गए, तो उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आएगी आएगी। मतलब होता नहीं कि इफ यू बिकम ए कैपेबल देन सक्सेस विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली।
अगर आपके प्रोफाइल में अगर वो विजिबल है लिंक्डइन पे, नौकरी पे, तो आपको कॉल आएंगे ही आएंगे। और आपको जब कॉल आएंगे तो वो आपका कॉल है कि आपको इंटरव्यू कैसे करना है, क्योंकि इंटरव्यू में और कोई नहीं रहेगा, आप रहोगे, इंटरव्यूअर रहेगा, ना हम रहेंगे ना कोई और रहेगा, ना आपका मेंटर रहेगा। तो एट द एंड आपको यही फोकस करके चलो कि इंटरव्यू आपको खुद से क्रैक करना है। मतलब उसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर इंटरव्यू अगर खुद से क्रैक करना तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज समथिंग दैट इज योर कॉल। I see some message here. Okay, so I don't remember if I opted for the recording at the time of registration. Give me the link. Okay. But you can ping on this number. Okay, I'm just giving the number. If anybody has any question, you can ping on this number. This is WhatsApp number. You can just WhatsApp, and then we will कुछ अगर स्पेसिफिक डिस्कस करना है तो आई गिवन दिस नंबर इन द ग्रुप। ओके, कुछ अगर स्पेसिफिक डिस्कस करना है यू कैन व्हाट्सअप, विल डिस्कस। एंड उसके बाद अगर आपके बारे में अगर वन टू वन सेशन के लिए कुछ चाहिए तो जस्ट बुक द कॉल। ओके, बुक योर स्क्रीनिंग एंड, इसको हम लोग बेसिकली स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू सेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि हम लोग जब तक अगर हैप्पी नहीं है आपके प्रोफाइल को लेके, आपके एक्सपीरियंस को लेके, आपके परसेंट ऑफ मार्क्स को लेके, डेफिनेटली जब तक हमको पता नहीं देन हाउ वी कैन गाइड, बिकॉज नथिंग इज जेनरिक इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई अगर बोलता है कि नहीं नहीं चलो आपके लिए जो मेरे लिए प्रोसेस काम करो आपके लिए भी काम करेगा, और जो हमको मेरे पास जो गाइडेंस है वो सेम गाइडेंस आपके लिए वर्क करेगा, दैट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हैव सम डिफरेंट background. I'm coming from a different background. I have a different qualification. I have a different kind of presentation skill. I have a different kind of communication skills. So सबके लिए सब कुछ काम नहीं करता, इसीलिए जो है ना रोड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पर्सनलाइज रोड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से कुछ चीजें जेनेरिक रहेंगी, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट जेनेरिक रहेगा, ब्रांडिंग पार्ट जेनेरिक रहेगा, बट स्किल स्टिल आपका इंटरव्यू स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। आई थिंक कल के मैंने आपको स्लाइड में बताया था, दिखाया था क्या कल के स्लाइड में कि you can see the huge crowd that we had conducted in the BIT का हमें हमें अभी हमने एक सेशन कंडक्ट किया था जहाँ पे कि एंड दैट सेशन वाज ओनली फॉर द कम्युनिकेशन स्किल। ओके, दैट वाज क्राउड वाज ऑलमोस्ट मोर देन 400, जहाँ पे कि हम लोग कल का इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल का जो हमने सेशन कंडक्ट किया था, लेट मी कैन ओपन, इफ आई कैन ओपन दिस वन, सो यू कैन सी दिस स्लाइड। ओके, ये ऑलमोस्ट ये क्राउड जो था ना 400 से ऊपर का क्राउड था, ये सारे के सारे 2022 के पास आउट बैच थे, जहाँ पे कि हमने यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे हमने काफ़ी फोकस किया था। और काफ़ी लोगों को यहाँ से मतलब ओवरऑल जो कंपेयरिंग जो परसेंट था बिफोर टेकिंग हैंड ओवर फ्रॉम आवर साइड एंड देन आफ्टर दैट जो उनका जो प्लेसमेंट का रेशियो था काफ़ी बेटर था। बिकॉज वाई बेटर था, क्योंकि वी आर वर्किंग इन द थ्री वर्टिकल, वी आर वर्किंग टारगेटिंग एट द सेम टाइम, बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द थ्री डिफरेंट थिंग्स। वी आर फोकसिंग ऑन द corporate, we are focusing on the institutions, we are focusing on the basically placement part और staffing part. Staffing is completely all together, that will confuse you because staffing के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। all together is a different thing, staffing जो कि आपसे relevant नहीं है, that is relevant to the organization, so we are also in a staffing phase as well। सो स्ट्रेटेजी काफ़ी डिफाइंड रहती है, हम लोग फोकस रहते हैं, एंड देन एक ही हमारा टैगलाइन है कि शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट अगर चाहिए देन ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग नहीं हैं, आप कहीं और ट्राई करो, कहीं और जाओ, बट फॉर अस विथ अस देर इज नो शॉर्टकट। ओके, एंड आई एम डन फ्रॉम माई साइड। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको अगर वन टू वन सेशन आप आओ देन विल डिस्कस इन मोर डिटेल, बुक द सेशंस, and then we'll also guide you more from a HR perspective, we'll guide you more from a recruiter perspective, and then we will discuss कि आपका ओवरऑल रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपका ओवरऑल करियर कैसा होना चाहिए, आपको अगर जॉब लेना है मार्केट में तो आपको क्या करना है। एंड अगर आज अगर आप सोचते हो कि अगर आपको जॉब लेना है तो जस्ट फोकस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप ये मत सोचो कि हमको कल जॉब मिलेगा, हमको परसों जॉब मिलेगा, नहीं। 6 मंथ्स के बाद में, अगर उस रोड मैप के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलता है देन डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी आ जाए हम लोग किसी का भी इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं। प्रोसेस है, डिफाइंड है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द डेटा एनालिटिक्स, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड फॉर द एसएपी कोर्सेज एज वेल। अभी हम लोग हमारा साइड में एक एसएपी का एक अलग वर्टिकल है, हमारा डेटा का एक अलग वर्टिकल है, हमारा ऑटोमेशन का अलग वर्टिकल है। तो सेम थिंग, दिस इज डिफाइंड फॉर एवरीथिंग। क्योंकि लास्ट का यस्टरडे लाइक कि अब हमारा जो जब सेशन हुआ था तो 4:30 को हमने एक एसएपी के कैंडिडेट के लिए हम लोग वन टू वन स्क्रीनिंग कर रहे थे। एंड ही इज फ्रॉम एचआर, बिकॉज एचआर में एसएपी इज ऑल्सो यूज इन द एचआरसीएम, एचआर में। एंड ही हैज लाइक मेनी गैप्स, 11 years में बहुत सारे करियर गैप थे। इवन एज ए एचआर कम्युनिकेशन बेटर नहीं था,
तो उसका हम लोगों ने गाइडेंस एक अलग होता है, क्योंकि सी डिपेंडिंग ऑन द पर्सनलाइज जो गाइडेंस, इसीलिए हम लोग सेशन बोलते हैं कि सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी गेटिंग अ पर्सनलाइज गाइडेंस इन द सेशन एंड अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर करियर। ओके। अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है, बिकॉज आई डिस्कस मेनी आइटम्स मेनी डिटेल्स हियर, कुछ क्वेश्चन है, देन वी कैन टेक दिस क्वेश्चन। नहीं कुछ क्वेश्चन है तो फिल द फॉर्म। अगर आपको लगता है कि अगर आपको अगर हमारे साथ अगर एक 1-to-1 सेशन चाहिए, यू कैन फिल द फॉर्म। वी विल बी शेड्यूलिंग योर कॉल, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे, आपको एक चीज एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड देन वी विल गाइड यू कि आप जॉब कैसे ले सकते हो इंडस्ट्रीज में। कुछ है क्वेश्चंस किसी का? एनीबॉडी अभी तो? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? आई टेक फ्यू नेम, मुस्कान, दिव्या, राहुल, अंकित, कुछ भी किसी का कुछ क्वेश्चंस है? और ऑल ओके और ऑल गुड सो फार? कुछ भी डाउट्स है बताओ, वी आर हियर अगेन, वी कैन डिस्कस फॉर अनदर 5 मिनट्स 10 मिनट, बट कुछ डाउट्स हो तो आप बताओ, विल टेक दिस अप। At least some feedback. Did you like the content what we presented? एनीथिंग, अगर कुछ अगर पर्सनल डिस्कस करना है, विल बी डिस्कसिंग पर्सनली इन आवर 1-to-1 कॉल। ओके, अगर आप कॉल बुक करते हो। अदरवाइज कुछ फीडबैक है अबाउट द सेशंस, यू कैन ऑल्सो लेट अस नो द सेशंस फीडबैक, कुछ है किसी का? Even for improvement, you can suggest so that we can यस। make it better. ओके, so I'm taking as a no for now. Okay, and then we'll be getting a link, okay, in the WhatsApp group as well. No sir, no doubts, Muskan Khatriya complete, thank you Muskan. एंड कुछ भी you'll be also getting a गूगल का लिंक भी अगर आपके पास आएगा फॉर ओवरऑल फीडबैक। ओके, so just provide the feedback. Okay, excellent session राहुल साहुल। ओके, what is the process after the fill the form? ओके, so अमित, जैसे मैंने बताया कि आप फॉर्म फिल करोगे, आपको हमारे साइड से एक कॉल आएगा, एंड देन वी विल बुक द सेशंस विद मेंटोर एंड विथ अस। ओके, सो एक हाफ एन आवर का, ऑलमोस्ट ये हाफ एन आवर लगता ही है, हम लोग बोलते हैं 15 to 20 मिनट्स, बट वो हाफ एन आवर पूरे के पूरे डिस्कशन में जाता ही है, ठीक है। एंड देन ऑल द 20 डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू विल बी डूइंग इन दिस नेक्स्ट वीक, एंड आपको एक फीडबैक मिलेगा, फीडबैक के बेसिस पे यू कैन जस्ट टेक योर, यू कैन डिसाइड। ओके, सो आपको हमारे साइड से एक कॉल आएगा, एंड देन शेयर द लिंक। लिंक आई थिंक मैंने शेयर किया है, क्या नहीं शेयर किया है? जस्ट चेक कि सबको लिंक मिला है क्या? आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन। हैव यू रिसीव द लिंक? एवरीबॉडी से जस्ट टाइप यस अगर आपको लिंक मिल गया है तो। थैंक यू समित इज, अदर्स कैन ऑल्सो कंफर्म। अगर आपको लिंक दिख दिख रहा है, विजिबल है, देन यू कैन ऑल्सो टाइप यस। या थैंक यू, सो आई कैन सी सम थिंग्स। ओके, एंड देन जो भी गाइड, जो भी बोनसेस हैं, जो भी लिंक्स हैं, दैट विल बी शेयर इधर टुडे ईविनिंग एंड टुमारो मॉर्निंग। या okay, so thank you all for with us for from last 2 days. Okay, and then joining with us and going through the sessions, and yes, further up session book करो 1-to-1, we'll discuss more about you in this 1-to-1 sessions. Yeah. Okay, so I think we can close this session now. Thank you. Thank you, Thank, Sanu, for taking this session from last 2 days from your busy schedule. Okay. So thank you so much, Santosh, for this opportunity. thank Yeah, you. thank you. And by the way, definitely we will not, like Isanu is also from the industry. She is already working. Okay. So she is working as a data science engineer that I explained yesterday. Okay. So she will be also part of some of the batches as a mentor. Okay. But not now. Like for this week, we have already another mentor, this Anand Tiwari. Okay. He's from Infosys. Thank you. So we'll be closing this session now. Thank you all. Thank you. Bye. Thank you. Have a good day. Good weekend.